We'll move to our workshop. We have already done with warming up session of the same poem, and actual poem also we have already seen. Now the most important part of the poem, that is English workshop, because the questions in your exam come from this section. So now see, English workshop, the first question, rearrange the letters to make meaningful words occurring in the poem. राइट अभी जो भी वर्ड्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं जंबल, मतलब आगे पीछे करके दिए, दैट यू मे से दैट मिस स्पेल, आपको वो लेटर्स आपको सी आई हैव गिवन वन दैट फॉर एग्जांपल. So see this word, this is the first word they have given. Now from these word you have to make a meaningful word. This is the activity, this is the first one that I have just taken here to prove, right? Afterwards that I will just give you the orally. See, that is this word, never try to read out this word because it doesn't exist actually. With the help of these letters, इस letters के help से आपको क्या करना है, एक new word बनाना है, right? So for example they have given here, अभी देखो ये M हम पहले यूज करेंगे, that, afterwards I, correct, afterwards R, A, C, L, E, yes. So this is miracles. All these letters are being used. अभी ये meaningful word हो गया. ऐसे ही नीचे words दिए हैं. So like this was the first, this second, third. I will read directly the answer, means इस section में से मैं answers directly read करूंगा, right? So first was that miracles, second is wisdom, right? Second जो है वो है wisdom, correct? Third one is, say I will write here, this second one is wisdom, third one is courage, third one is courage, correct? And afterwards it is surprise, fourth one, correct? So this is surprise. Afterwards beauty, beauty. Afterwards sixth, that is dreams. Whether it is plural, yes it is a plural, dreams. Value, afterwards is seventh number is value, and eighth number is, it is wonder, correct? You should mark this wonder. Now this was the answers for this first question. A, it is A section. Now B will give you write words from the poem that describe the following. अभी ऐसे words आपको poem में से pick करने हैं जो words वहां पे दे उसको describe कर रहे हो, right? For example, the sky word is the first. Sky को describe करने वाला word कौन सा था जो poem में था? That was stardust. Second, heart, that nurturing, correct? Third one, hand, so aging, A-G-I-N-G, aging hands, you know. Afterwards, beginning means new, surprises, wonderful, right? All the answers I have already given. Second question now. The second question is say why. This is purely personal response type of the question, जहां पे आप लोगों को खुद का आंसर करना रहता है, right? आपके words में लिखना रहता है. But I will give you certain hints, right? I will explain the question first and then you just try in your own words, right? See, the sky has magical quality. क्यों बोला है पोएट ने कि स्काई के पास मैजिकल क्वालिटी है? क्यों? Because I had explained you in the poem, right? What is the reason? Because the angel dances amidst the cloud. मतलब cloud में angels dance कर रहे हैं, and this is a magical moment for the sky. So that's why the sky has a magical quality. Afterwards, you should elaborate these 3 to 4 lines are already given there. You should elaborate these. Next now, even an aging hand has beauty. Aging hand, the old people, right? Means grandparents. I had explained you. So they are having a beauty because they can feel our pain, right? They can share, they love, they can teach us how to express our feelings, how to love others, right? We should not hurt each other. So they teach all these things, and that's why, that is a reason aging hand has a beauty, correct? Third one,
वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रांग एंड करेजियस. हमें बिलीव करना चाहिए कि हम स्ट्रांग है, करेजियस है. क्यों? बिकॉज द क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ से व्हाई. So here simply we should say that we should believe on our inner strength. हमारे अंदर जो शक्ति है, जो strength है, उसके ऊपर believe करना चाहिए. We should have that strong beliefs, right? We should have that strong courage. Then only you can achieve our aim. Elaborate with the help of these points for this question. Question number third. अभी third question है, that is make a list of any 6 things that the poet wants us to accept as true. मतलब पोएम में ऐसी कौन सी चीजें दी है कि पोएट हमें बोलता है कि एक्सेप्ट करो, राइट? विल गिव यू द सेंटेंसेस, सम ऑफ देम. एवरी डे ब्रिंग्स न्यू होप, पॉसिबिलिटीज, राइट? सो दिस इज द लाइन we should accept, right? Miracles happen, this is second one. Third one, dreams come true, right? ड्रीम्स जो है हमारे वो ट्रू होते हैं, right? Afterwards, one must see wisdom in God's plan, right? Next one, courage and strength lie within us. Courage and strength हमारे अंदर ही रहती है, सिर्फ हमें वो पहचानते आनी चाहिए, right? We should recognize our strength and power, right? Courage. Life is a gift. We should accept it. Whatever will come in our ways, we should accept it. We should never feel all the time sad कि यार मेरे लाइफ में ऐसे ही होता है, ऐसे ही मतलब डिफिकल्टीज आते हैं. नो, यू शुड एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर की एक्टिविटी है. दिस एक्टिविटी कम्स फॉर 2 marks. वेव डायग्राम, दिस इज बीइंग नोन एज वेव डायग्राम. या वेव डायग्राम में क्या रहता है कि एक डायग्राम दी रहती है एंड द सर्कल्स और द बॉक्सेस दे गिव, राइट? और आपको बोलते हैं यहाँ पे एक मतलब इंफॉर्मेटिव वर्ड दिया रहता है एंड लाइक फॉर एग्जांपल हियर दे हैव गिवन पॉजिटिव क्वालिटी, और उसमें से एक वर्ड ऑलरेडी उन्होंने फिल कर दिया रहता है. फॉर एग्जांपल आई विल राइट हियर होप और यहाँ पे है पॉजिटिव क्वालिटीज, करेक्ट? अभी ये 4 वर्ड्स आपको फिल करने हैं. ये सेम डायग्राम अगेन यू हैव टू ड्रॉ इन योर आंसर शीट फॉर 2 marks. इट कम्स फॉर 2 marks. सो सी पॉजिटिव क्वालिटीज. अभी कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज है, पॉजिटिव वर्ड्स कौन से हैं? यू हैव टू राइट, करेक्ट? सो फर्स्ट दे आर ऑलरेडी गिवन, उन्होंने एक आपको करके दिया रहेगा. इफ दे डोंट देन यू शुड राइट इट योर ओन. फर्स्ट होप, सेकेंड स्ट्रेंथ, आफ्टरवर्ड्स courage, trust, believe, confidence, all these words relate to positive qualities, correct? Now next, read the lines below. Question number 5th, read the lines below and see. To believe is to see angels dancing among the clouds, and the above line contain a human characteristic. Dancing gives to something non-human angels, and the figure of speech used in the line is called personification. Personification is a kind of a figure of speech. Inanimate objects रहते हैं और हम उनको ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि वो animated है, right? मतलब कि living है, not animated, that is living, as they are living. For example, my pen is running very fast. Can the pen run? So this is the living thing. Is this living thing? No, right? It is non-living thing, but I'm using what? I'm considering this pen as a living, right? So this is a personification used here. So यहाँ पे भी वही है, right? Dancing that given non to human angels, मतलब angel non human है, dance कौन करता है? That human, correct? And that is angel has been compared there. So that's why personification figure of speech has been used. Second question, B. To believe is to know that every day is a new beginning. And the third, to believe is to know ... life is a gift. So lines in the poetry such as the above state the general truth and can be used as sayings or quotes, etc. They contain the figure of speech called epigram. Epigram means a short but very meaningful sayings, right? Short or very brief, ब्यूटीफुल sayings और मीनिंगफुल sayings, right? Quotations भी हम बोलते हैं बहुत बार. So now the activity they have given on this, that is find from the poem 3 other examples of epigram.
अभी ये जो एपिग्राम है, जो मीनिंगफुल लाइन से, राइट, कोटेशन से, ऐसे कोटेशंस वाले कुछ लाइंस आपको पोएम में से ढूंढ के लेनी है, राइट। आई विल जस्ट गिव यू द स्टांजा नंबर एंड द लाइन नंबर, राइट, and which line that, from which line to line that you have to write. This is the example of epigram. Mark it. This is the first example we will have. पहले एग्जाम्पल तो हम लेंगे कि सेकेंड स्टांजा जो है, राइट, मतलब जो भी सेकेंड स्टांजा है, सो दैट सेकेंड स्टांजा फर्स्ट टू लाइन्स, राइट, जो स्टार्ट हो रही है फॉर एग्जाम्पल टू बिलीव और एंड हो रही है द क्लाउड्स, सेकेंड स्टांजा फर्स्ट टू लाइन्स. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ epigram, first example, right. second stanza line start हो रही to believe और end हो रही है the clouds. second stanza first two lines, right. second example fifth stanza line start हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, right, in the poem to believe to know, fifth stanza है, right, it is a fifth stanza, right, and the first three lines, fifth stanza के पहले तीन lines to believe to know और line end हो रही है, मतलब थर्ड लाइन एंड होती है लाइफ इज अ गिफ्ट. सो दीज थ्री लाइन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिग्राम. टू लाइन्स, टू एग्जाम्पल्स हो गए. अभी थर्ड एग्जाम्पल जो सिक्स स्टांजा है, अगेन फ्रॉम द सिक्स स्टांजा में से भी फर्स्ट थ्री लाइन्स, एज यू कैन सी द लाइन इज ऑल्सो स्टार्टिंग एज सेम टू बिलीव, राइट, टू बिलीव, and the line is ending waiting to happen, right. So this is the sixth stanza, again three lines, sixth stanza first three lines जो है, first three line that are example of epigram, right. तीन lines मैंने दिए हैं, तीनों stanza में से second stanza, fifth stanza and sixth stanza, right. These are the examples of epigram. You will get a question. आपको ये lines learn करने की जरूरत नहीं है, because the same poem will be printed in your question paper. आपको सिर्फ वो ढूंढना है, पोएम लर्न करनी नहीं रहती है, राइट, मतलब बाय हार्ट नहीं करना है. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि ये लाइन थी एपिग्राम की एग्जांपल में, ये लाइन थी. सो सिमिलरली, सो नेक्स्ट एक्टिविटी, divide the class into 5 groups. Each group can prepare a decorative chart poster using an epigrammatic lines from the poem. You may use calligraphy, painting or paint program on a computer with permission. Put up the charts in your school. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि इस पोएम में जो भी वर्ड्स आए, कोटेशंस आए, एपिग्राम्स आए, वो चार्ट पेपर पे लिखो, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, कैलीग्राफिक में लिखो, कंप्यूटर में पेंट पे टाइप करो और उसकी प्रिंट निकाल के ड्राइंग किए हुए अपने क्लासरूम में विथ प्रायर परमिशन टू योर टीचर स्टिक इट, राइट, चिपका दो. This is the activity. They will not ask you in the exam, right. This is extra curricular activity, extra activity है, right. So till previous question, till question 5th, these all first 5 activities will be prescribed for your question paper, for your exam, not the last one, 6th. But it was important, so that's why I just explained what you have to do, what is that activity. Okay, in this way we have done with our English workshop of the poem A Time to Believe, right. We have done with warming up, actual poem and English workshop with that 5 important question inclusive the last one also, right. So now we have ended. We'll see in the next chapter.